Come to 50th one. The following appearance is not seen in. This again is a repeat question from the exam. You can see cannonball mets. I have tried to explain this multiple times in my previous discussions with you. Cannonball mets can be seen with choriocarcinoma. It can also be seen with renal cell carcinoma. It can also be seen with malignant melanoma. But invasive aspergilloma तो CT chest पे दिखाई देता है ना. You cannot be seeing a invasive aspergilloma on like an X-ray. Invasive aspergilloma will require those findings, no, like a halo sign, a tall sign, all those findings that you read of a halo sign, or like this will grow in a cavity. I mean, aspergillus grows in a pre-existing cavity in the lung. So if there was a halo sign cavity on a HRCT, then I would have said, okay, I can think in terms of aspergilloma. But X-ray में तो aspergillus की growth नहीं दिखाई दे सकती है. So answer to question number 50th is option number A. Cannonball mets number 1 causes choriocarcinoma, then is renal cell carcinoma, malignant melanoma, and even breast cancer. 4 causes must know for you for cannonball mets. Coming to the 51st, he said following radiological appearance is seen in which of the following. So if you check out the X-ray of this patient, you can see a double density with respect to the atria of the patient. It is a double density of the atria. What is happening in this patient is that there is a enlargement of the left atria. वो enlarge atria enlarge हो के वो जो enlarge left atria है वो right को push करता जा रहा है. So what is happening in this patient is that the left atria is enlarged and it is causing circumferential expansion and it is putting pressure on the right atria. The radiological appearance in this patient shows which of the following. Then answer would be given as enlarged left atria. What I've tried to show before you is a question from previous years where they wanted to hear about or test you regarding double atrial contour or double atrial sign. This double atrial contour basically is because the left will push the right. So it's not the right atrial enlargement, it is the left pushing the right. You have to identify left pushing the right. Okay. Answer to 51 is option number A, enlarged left atria. Left atria does not form the left heart border, but when it enlarges circumferentially, it will push the right one. The remaining left heart border orientation is perfectly fine for this question. We come to 52nd. This question has been asked 2 times in your exam. One in anatomy section, like they gave a section of the heart, transverse coronal section of the body. They cut the body through the middle and they showed various cardiac chambers. And second time they asked with respect to a MRI. When you check out this image, you will notice that the structure which is present most posteriorly, the posterior-most chamber of the heart is the left atria. This is the right atria, this is the right ventricle, and then this would be the left ventricle. The most posterior chamber of our heart, the most posterior chamber of the heart in this particular patient is gonna be the left atria. The arrow was at the left atria, or X alphabet was at this particular area. In the app, in the PPT it's dislodged, but in the actual, in the paper, the X alphabet was at the left atria area. The answer to 52 is option number A. So I've described 2 aspects with respect to the left atria. One, what is the thinnest chamber of the heart? Left atria. What is the most posterior chamber of the heart? Left atria. And left atria does not form the left heart border, but in X-ray it will push the right, and therefore double atrial shadow can occur. Say the points once again. Left atria is the thinnest and the posteriormost chamber of the heart, 1 point, and the enlarged left atria pushes the right. So answer to 52 is A. Coming to 53, this I want you to comment here. Patient's X-ray is given and he's having low saturation of oxygen. He's having fever with rusty sputum for previous like a couple of days. So which finding is likely to be present in this guy? Any patient with a respiratory illness is bound to have a low oxygen saturation. Plus the chap is having fever with rusty sputum. So we will think in terms of pneumonia. Even when you check out the X-ray of this patient, you will notice a patch. It's a lobar pneumonia in the left lower lobe of the patient. You can see a patch in the left lower lobe. So it is a lobar pneumonia. And for any patient having a lobar pneumonia, the auscultatory finding that you will be finding is bronchial breathing. You see option number D, this rhonchi with hyperresonance, this is a feature. Like, you know, I also got comment as option number D, then hyperresonance and then rhonchi, that is a feature of asthma, na? Because asthma mein hyperresonance ki ho jati because there is a air trapping that is happening.
So the air trapping can result in hyperresonance and rhonchi which is present. Then dull note is a feature with vesicular breathing that can be seen with pleural effusion. If there is like a hydrothorax in a person, then there would be vesicular breathing, but there would be a dull note that is present. Distant breath sound with hyperresonance is a feature that is seen with pneumothorax in a person. This case is that of pneumonia. I mean, how to identify that? Just check out the X-ray. Where I put the arrow, you can notice that this is left lower lobe consolidation. That consolidation makes it diagnosis as lobar pneumonia, and the auscultatory finding of lobar pneumonia is bronchial breathing with a dull note. So this was more of an applied question that you were to identify. The answer to 53 is option number C. Bronchial breathing is a feature of lobar pneumonia. Coming to 54, bullet-shaped vertebra are seen in, this is easy, this is seen in achondroplasia. जो सिकल सेल अनीमिया होता है उसमें तो फिश वर्टिब्रा होता है, तो इसलिए बाहर हो गया. रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी में रूगर जर्सी वाला वर्टिब्रा होता है. इट इज रूगर जर्सी स्पाइन or it is Ruger Jersey vertebra that can be seen. And Paget's disease will be having very white color vertebra that's called as ivory vertebra. So there are 4 questions that are covered here. Fish vertebra for sickle cell anemia, Ruger Jersey vertebra for renal osteodystrophy, ivory vertebra for Paget's disease. That leaves me with only one as an answer. Bullet-shaped vertebra are seen in achondroplasia. So this question is again testing your exclusion capability. We come to 55. Very classical for FMG exam. Comment on your diagnosis. I'll just wait for a while. Let me have some water while I'm waiting for you guys to comment. Yes, guys, you can notice that the vertebra looks to have slipped anteriorly. One of the vertebra in the X-ray shows like lumbosacral. You can see the sacrum inferiorly. No, this structure that you can see here is like the sacral vertebra. And one of the lumbar vertebra has been pushed anteriorly, so that would be spondylolisthesis. And then they always give x-rays where they expect you to pick up these pointers here. So if you check out this x-ray that is currently on the screen, you will notice that the disc space between the two, I mean, this is a degenerative spine disease, and because of this degenerative spine disease, the space between the vertebra is significantly reduced. So the word that you'll be using to describe this would be that the patient is having spondylosis. The word spondylosis basically means the joint space is reduced. But if you focus on the third one, that same X-ray that I showed you, where one of the vertebra has been pushed anteriorly, so we will use the word spondylolisthesis, that is to mainly describe the displacement of one of the vertebrae anteriorly. Now I want you to focus on the second vertebra and compare with this. This is the vertebral arches. These are the vertebral arches. It looks like there's a fracture present here. If I zoom in, this looks like a collar around a dog. Even if you don't want to get into that Scotty dog collar, I just want to say there's a fracture in pars intercalaris. This fracture in the pars intercalaris will make the diagnosis totally different. Now we will be using the word spondylolysis. Look at the word here. Spondylo is still there, but I'm using the word lysis. The word lysis I'm using, why? Because you can notice that there is a fracture that is present here. So in the remaining ones, there was no fracture. In spondylosis, joint space was reduced. Spondylolysis, lysis में क्या था कि there's a fracture that is present. Listhesis is an anterior displacement of the vertebra. And the last one is that bamboo spine. Bamboo spine is a feature of ankylosing spondylitis, in which there are dagger sign appearance also present. Like pura straight spine lag raha hai. It's like a straight spine that is present because of the inflammatory process related to the spine that's found in ankylosing spondylitis. So I think the fourth one is the easiest one for anybody to identify. The spondylitis वाला part तो inflammation हो गया. आइटिस वाला जो पार्ट है वो तो इन्फ्लेमेशन हो गया. स्पॉन्डाइलोसिस का मतलब है जॉइंट स्पेसेस रेड्यूस. स्पॉन्डाइलोलाइसिस का मतलब है देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द पार्स इंटरकैलारिस, एंड स्पॉन्डाइलोलिथिसिस मींस अ एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट. द वर्ड इज lysis, and what is lysing here? Then the technical word is that arches of the technical word for those arches would be pars intercalaris. Okay, so it's visible now. Yeah, again, I would rate as one of the most important slides for your exam. Question number 55, you have to get right, guys. So if you got it correct, great. If not, then this slide will be one of the priority slides for you guys. 55 is done. We go to 56. Patient presents with shortness of breath for past 1 month. The X-ray is shown. तो एक्सरे में यहाँ पे दिख क्या रहा है? तो एक्सरे में व्हाट यू कैन सी इज वेरी वेरी क्लासिकल. ये तो अयोटिक नक्कल है, उसके नीचे से जग हैंडल के जैसा लग रहा है. पल्मरी अटरी सेगमेंट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट.
Normally, we don't get such prominent pulmonary artery segment. Now, this is basically a feature that is seen with pulmonary artery hypertension. And the question is also giving a hint, that the man is having shortness of breath present here. सार्केडोसिस क्यों इसका आंसर नहीं है, क्योंकि सार्केडोसिस में यूजली फीमेल पेशेंट होता है और बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी होती है. सो यहाँ पे कोई लिम्फ नोड्स तो दिख नहीं रहे हैं. सो देयर इज नो हाइलर लिम्फेडेनोपैथी. ऑल यू कैन पिक अप इज द पल्मोनरी आर्टरी सेगमेंट दैट इज prominent. In interstitial lung disease, there would be honeycomb lung, and the lung will look relatively chota, and most of the time they'll give you a CT chest for the honeycomb appearance. Pneumothorax जो होता है उसमें तो फिर hypertransluent lung होता है. Lung will appear like more black as compared to normal. There is absent vascular markings. There would be some trauma history given in a question. So it's like it is not pneumothorax. Pneumothorax will be spontaneous जो होता है, that is seen with cigarette smokers. Hypertransluent means the X-ray will appear more black than normal because there is no lung and there's increased vascular markings. The prominent thing for this patient is option A, that is pulmonary artery hypertension. 55 comment किया आपने. Yeah, 55 was Bombay. 56 is, that is pulmonary artery hypertension for the prominent segment of the pulmonary artery that you can see. Coming to 57, patient presents with icy cold toes and wearing woolen socks in summer season. बड़ा सरप्राइजिंग बात है. इंडिया में सो हॉट ना, अभी तो कौन सॉक्स डालेगा, बट द पेशेंट इज वेयरिंग वुलन सॉक्स इन द समर. बीपी उसका बढ़ा हुआ है. सो इज सेइंग व्हाट इज द कॉज विच इज प्रेजेंट हियर. आई जूम इनटू द एक्सरे एंड व्हाट यू विल नोटिस इज कि जो रिब्स का नीचे वाला हिस्सा है वो टूटा हुआ है. लाइक देयर इज अ इंफीरियर नॉचिंग ऑफ द रिब्स. This inferior notching of the ribs is because of the collaterals that are developing in this patient. The correct answer to 57 is coarctation of aorta. This is again a very classical X-ray that they give in your paper. That is, coarctation of aorta will always be exhibiting inferior notching of the ribs. Coarctation of aorta will always be revealing inferior notching of the ribs. That inferior notching is primarily because of like the collaterals that will be developing in this case. ये क्वेश्चन थ्रोम्बोजेटिस ऑब्लिटरांस का नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पे तो स्मोकर वुमन तो ठीक है पर उसमें बीपी नॉर्मल होगा ना. पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में ऐसा कोई नॉचिंग नहीं पड़ते, टाकायासु में भी नहीं पड़ते. सो वी व्हाट यू टू पिक अप फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज द इंफीरियर नॉचिंग ऑफ द रिब्स अलोंग विद हाइपरटेंशन. आंसर टू 57 एज वेल पिक्ड अप इज ऑप्शन बीटा. 58 is that very classical appearance which I can say is a miliary appearance. Snowstorm appearance भी बोल सकते हैं इसको. Miliary picture is present. Or instead of miliary appearance, I can call it a snowstorm appearance as well in the chest X-ray. This is usually seen with disseminated tuberculosis, लेकिन TB तो दिया नहीं है यहाँ पे. So this miliary picture of snowstorm appearance can be seen with respect to parasitic infestation, that is tropical pulmonary eosinophilia. We are a tropical country. We can be having patients suffering from filariasis और filariasis की वजह से भी इस टाइप की प्रेजेंटेशन आ सकती है. मिलियरी पिक्चर और स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस कॉमनली मिलता है टीबी के साथ में. टीबी के बाद में आंसर होता है सिलिकोसिस, लेकिन उसके बाद में जो कॉज आपको याद रखना होता है टीबी और सिलिकोसिस के बाद में वो है ट्रॉपिकल पल्मरी इस्नोफिलिया. What is the cause of tropical pulmonary eosinophilia? That would be a worm. That worm infestation is by the name of filariasis. The correct answer to question number 58 is option number B. आपको 3 important causes आने चाहिए मिलियरी पिक्चर के: TB, silicosis, and tropical pulmonary eosinophilia. These worms are migrating through the lungs, and that is why this manifestation is developing in a patient. 58 is sorted. We go to 59. A 40-year-old man is admitted with high-grade fever, rusty sputum, and shortness of breath. The X-ray is shown in this case. तो आप यहाँ पे एक तो लोबार निमोनिया तो आइडेंटिफाई कर रहे हो, बट एग्जाम में उसने पूछा कि ये राइट मिडल जोन है. वो तो साइड तो पता चली गई कि मतलब दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट. वेदर इट इज राइट मिडल जोन और वेदर इट इज राइट लोअर जोन, तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं लैटरल व्यू में. लैटरल व्यू में जो वाइटनेस दिख रही है वो आगे की तरफ दिख रही है. अगर ये पीछे होती, जो एरिया में अभी मार्क करूंगा ग्रीन से, ये पीछे पोस्टीरियर लोब होता है. सो सपोज इफ इन दिस पर्टिकुलर एक्सरे, suppose in this particular X-ray the whiteness was present in this particular area, that is primarily the green wala area, then I will say it is the right lower lobe. Then I would have said this is the right lower lobe, but the whiteness जो है वो आगे की तरफ है जो मैंने येलो से मार्किंग करी है. So this is the right lower lobe of the patient. This is the right middle zone. I'll write the alphabets here. This is the middle zone. This is the lower zone. The pneumonia is occurring in MZ, that is the white area is the middle zone. So the answer to this particular question is right middle zone pneumonia.
On this the query of students is कि सर फिर right lower lobe pneumonia कैसे दिखेगा? तो right lower lobe pneumonia will be looking like this. You will be having complete obliteration of the entire right cardiac border. इसको हम Silhouette sign बोलते हैं. So one of the very easy ways to identify is in AP view you will be getting a Silhouette sign, that is पूरा right cardiac border will not be visible. एंड अगेन द सेकेंड थिंग दैट यू विल नोटिस इज यहाँ पे ये एयर ब्रोंकोग्राफ्स भी दिख रहे हैं और जो वाइटनेस है वो पीछे की तरफ है. यू कैन सी दिस इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पेशेंट और आगे की तरफ यहाँ पे जो होगा दैट विल बी द मिडल लोब. सो यहाँ पे जो मेनली जो वाइटनेस दिख रही है वो पीछे की तरफ दिख रही है. सो दैट्स वाई वी विल से दैट द पेशेंट इज हैविंग अ राइट लोअर जोन निमोनिया. दिस इमेज that is currently shown to you is the right lower zone pneumonia with Silhouette sign and the whiteness present पीछे. This is vertebra और आगे यहाँ पे sternum है. I'll use a different one. Vertebra and the sternum respectively. And the इसको हटा ही देता हूँ मैं ताकि आप एयर ब्रोंकोग्राम को भी देख पाओ. Let me just remove this. अगर आप देखोगे तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस ये वाला जो ऐसे ब्रांच करता हुआ जा रहा है, ऐसे ब्रांचिंग हो रही है ना, दिस इज कॉल्ड एज एयर ब्रोंकोग्राम. So additional finding I wanted to bring to your attention is there is a air bronchogram that is visible, which is again a feature for diagnosis of pneumonia. And the whiteness जो है mainly concentrated है posteriorly towards the vertebra. ये पीछे vertebral bodies दिख रही है ना, this where I'm writing alphabet V, you can see the vertebral bodies there. तो whiteness जो है वो vertebral bodies वाली साइड पे आ रही है, तो posteriorly located हो गई. So this is gonna be the right lower zone. तो right lower zone जो होता है वो थोड़ा पीछे की तरफ होता है, राइट मिडल जोन जो होता है आगे की तरफ है. There are through must know X-rays that you must be able to solve for your previous year questions, right middle zone and right lower zone pneumonia. आजकल वो ये नहीं पूछता निमोनिया, वो बोलता है मिडल जोन बताओ या लोअर जोन बताओ. सो आंसर टू 58 इज ऑप्शन नंबर 59 is option number A. We come to 60th. Which chamber enlargement will be seen in this particular patient who's coming with breathing difficulty in cardioembolic events? यहाँ पे जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग दी हुई है दैट इज स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट हार्ट बॉर्डर. हमारा जो हार्ट का लेफ्ट बॉर्डर होता है उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट है. दिस इज अ फीचर ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस. एंड माइट्रल स्टेनोसिस में लेफ्ट एट्रिया लार्ज हो जाता है तो क्लॉट्स कैन गो इन द ब्रेन. कार्डियोएम्बोलिज्म इज ऑल्सो गिवन. देयर आर टू थिंग्स विच यू हैव टू आइडेंटिफाई इन दिस क्वेश्चन. द फर्स्ट थिंग इज the radiological information that is provided. I'll write the radiological information provided here. It is normal. लेफ्ट हार्ट बॉर्डर कभी स्ट्रेट नहीं होता. हेयर इन द एक्सरे यू कैन नोटिस स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट हार्ट बॉर्डर, बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है. दिस स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट हार्ट बॉर्डर इज अ फीचर दैट इज encountered in mitral stenosis. In mitral stenosis the left atria will get enlarged and this enlarged left atria can then form clots and these clots can then go to the brain and can cause embolic stroke. So cardioembolism से भी solve कर सकते थे कि अगर आपको एक्सरे नहीं भी पकड़ना है यहाँ पे, even if you say that I'm not comfortable with X-ray of this one, it's okay, you can solve the question. Cardioembolism क्यों होता है? Clots in the left atria. That's why the answer to question number 60 is option number A. We come to 61st. There is an alcoholic patient is coming to the emergency room with sudden onset upper abdominal pain that started 3 hours ago. The abdomen is rigid with guarding and rebound tenderness. क्योंकि guarding भी लिखा है और rebound tenderness भी लिखा है. So the diagnosis of this particular patient because of rebound tenderness is peritonitis. पेरिटोनाइटिस की जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग होती है वो होती है गैस अंडर द डायफ्राम दैट कैन बी विजिबल ऑन अ सीटी स्कैन और कैन बी सीन ऑन एन एक्सरे ऑल्सो इन अ स्टैंडिंग पोजिशन. ही सेज व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन. कमेंट गाइस, व्हाट इज मोस्ट सेंसिटिव? क्या ज़्यादा सेंसिटिव है? क्या एक्सरे ज़्यादा एक्यूरेट होगा या सीटी स्कैन ज़्यादा एक्यूरेट होगा? तो परफोरेशन पेरिटोनाइटिस के डायग्नोसिस के लिए रिबाउंड टेंडरनेस ऑलवेज टेल्स यू दैट द पर्सन इज हैविंग अ परफोरेशन पेरिटोनाइटिस. Like most of the time it will be a duodenal ulcer that would have perforated. So the more accurate answer for hollow viscous perforation or perforation peritonitis is a CT abdomen. The answer to 61 is option number D. Coming to question number 62, comment on the diagnosis of the barium swallow. So आपको बड़ा irregular shaggy appearance of the shaggy margins दिख रहे हैं. Shaggy appearance or shaggy margins of the esophagus can be seen. This is a feature that is seen with candida infection. This is not esophageal varices. Esophageal varices होते भी है तो lower 1/3 of esophagus में usually होते हैं. ये तो पूरा का पूरा esophagus में shaggy margins present है. So this goes in favor of esophageal candida. The correct answer to question number 62 is option number A.
This is again a repeat question from your exam. The answer to this is not intravenous pylography क्योंकि IVP में दोनों साइड पे दिखाई देता है. यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कॉन्ट्रास्ट है हमने यूरेटर में डाला है तो वो कॉन्ट्रास्ट एक ही साइड पे दिखाई दे रहा है. लाइक इफ यू स्कैन एट द लोअर पार्ट हेयर you will notice that there is a cystoscope present here and we're injecting a dye into only one of the ureter that we can evaluate the collecting system of the kidney. So this would be a retrograde pylography. जो intravenous pylography होती है उसमें bilateral pelvis visualized होता है क्योंकि डाई दोनों साइड पे ऊपर से आएगी, लेकिन यहाँ पे तो हम retrogradely जा रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं. So it is a retrograde pylography that is present. The answer to question number 63 is option number C. This is not a IVP as was wrongly answered in the recall. It is a retrograde pylography. Answer to 63 is option number C. Next is a rickshaw puller who came with multiple episodes of seizures and CT scan is shown. अगर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होता है तो उसमें तो ऐसे छोटे छोटे लीजन्स होते हैं जिनमें वाइट दिखाई दे रहा होता है, दैट इज गोना बी स्कूलेक्स. यहाँ पे तो सिर्फ वाइट ही दिखाई दे रहा है. इट्स लाइक वेरी बिग बिग लीजन्स, दे आर ऑल वाइट 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 एट मल्टीपल साइड्स बट यू कैनॉट सी अ स्कूलेक्स प्रेजेंट देयर. सो दिस इज नॉट न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस इन अ पेशेंट. देन इज ट्यूबरकुलोमा. ट्यूबरकुलोमा जो होता है वो तो लोबुलेटेड होता है, उसके जो सर्फेसेस ऐसे इरेगुलर होते हैं. और ट्यूबरकुलोमा तो यूजुअली एक तो होते हैं टीबी मेनिंजाइटिस जो होता है, राइट. तो ये तो बेजल गैंग्लिया और खासकर बेजल गैंग्लिया की इन्वॉल्वमेंट कर रहा है. ट्यूबरकुलोमा तो लोब्स ऑफ द ब्रेन में होता है, बेजल गैंग्लिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है. जो प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा होगा वो सिंगल होता है, तो एक ही बचा. द आंसर इज नॉट दिस क्योंकि बेजल गैंग्लिया इन्वॉल्वमेंट है तो दैट वुड बी टॉक्सोप्लाज्मोसिस. आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. जो अगर ऐसे मल्टीपल लीजन्स दिखाई दे रहे हैं, स्टारिस का अपीयरेंस है, स्कूलेक्स विजिबल है, तो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस. अगर सिंगल ऐसा लॉबुलेटेड लीजन्स दिख रहे हैं, ऐसे मल्टीपल लॉबुलेटेड लीजन्स हो सकते हैं और टीबी की हिस्ट्री प्रेजेंट है, देन इट इज लाइक ट्यूबरकुलोमा. बट अगर स्पेसिफिकली मल्टीपल लार्ज एरियाज आर प्रेजेंट, मल्टीपल एरियाज इन्वॉल्व बट साथ में बेजल गैंग्लिया की इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट है, देन इट इज डिसेमिनेटेड टॉक्सोप्लाज्मोसिस प्रेजेंट इन दिस पेशेंट. सो थोड़ा सा डिफिकल्ट था न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस वर्सेस ट्यूबरकुलोमा. ट्यूबरकुलोमा में यूजुअली एटीटी का हिस्ट्री होगा, एटीटी लिया हुआ होगा. यहाँ पे कोई एटीटी का हिस्ट्री नहीं था. बेजल गैंग्लिया का इन्वॉल्वमेंट है, मल्टीपल वाइट लीजन्स प्रेजेंट शोइंग सेरेब्रल एडिमा. द करेक्ट आंसर टू 64 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस. क्योंकि एड्स वालों में तो सीएनएस इन्फेक्शन जो सीजर करता है, आप इसको मेडिसिन से भी सॉल्व कर सकते थे. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज सीजर्स इन एड्स पेशेंट. द लीडिंग कॉज ऑफ सीजर्स इन एड्स पेशेंट्स इज सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस. मैंने ये स्टेटमेंट मेडिसिन में बोली हुई है, यहाँ तो रेडियोलॉजी में उसने पूछ लिया था. leading CNS cause of meningitis is cryptococcal meningitis, but leading cause of convulsions and seizures in a HIV positive patient is always cerebral toxoplasmosis. The answer to question number 64 is option number B. Coming to 65, you can notice presence of gas below the heart of the patient. The radiological finding that is present here is called as continuous diaphragm sign. When I write this finding of continuous diaphragm sign, the answer will become obvious. This is the feature that is seen with patients having pneumomediastinum. Yep. The answer to this is pneumomediastinum. It is not pneumoperitoneum. Pneumoperitoneum में तो गैस below the diaphragm होगा. pneumoperitoneum तो ऐसे होगा ना, फिर यहाँ पे ऐसे गैस होगी. The gas will be inferiorly located. This would be pneumoperitoneum, gas below the diaphragm. The X-ray shows gas below the heart, not below the diaphragm. मैंने gas below the diaphragm नहीं बोला. न्यूमोपेरिटोनियम इज गड, गैस अंडर द डायफ्राम. यहाँ पे मैंने गैस अंडर द डायफ्राम नहीं बोला, मैंने गैस अंडर द हार्ट बोला. दैट इज वाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट. द आंसर टू दिस इज न्यूमोमीडियास्टिनम. आंसर टू 65 इज ऑप्शन नंबर बी. 66 में तो ये सबसे आसान है, आई थिंक ट्रिपल बबल अपीयरेंस है. The triple bubble appearance would be seen with patients of jejunal atresia. So this is the easiest one among the ones that I've currently shown here before you. 66 is sorted. Coming to 67, you can notice the sawtooth appearance present. This sawtooth appearance will help you in identifying the condition as diverticulosis. अब diverticulosis तो लिखा नहीं है तो आप कमेंट करो. अल्सरेटिव कोलाइटिस तो है नहीं. अल्सरेटिव कोलाइटिस होता तो उसमें तो पाइप स्टेम कोलन होता है, और कोलोरेक्टल कैंसर होता तो उसमें एप्पल कोर अपीयरेंस होता है.
तो आप हेल्प कर दो मेरी। द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 67 इज डाइवर्टिक्यूलोसिस। क्यूलाइटिस नहीं है गाइस, आंसर इज नॉट क्यूलाइटिस। द आंसर इज डाइवर्टिकुलर डिजीज। डाइवर्टिकुलर डिजीज का मतलब क्या होता है? डाइवर्टिक्यूलोसिस। क्यूलोसिस की कॉम्प्लिकेशन होती है क्यूलाइटिस। तो क्यूलाइटिस में क्या दिखाई देता है? तो क्यूलाइटिस का डायग्नोसिस तो सीटी स्कैन पे होता है ना। आइटिस लिखा है ना, आइटिस का मतलब तो इन्फ्लेमेशन होता है। ये तो बेरियम एनीमा है। व्हाट यू कैन सी ऑन अ बेरियम एनीमा ऑफ दिस पेशेंट इज डाइवर्टिकुलोसिस। फॉर कोलाइटिस अगर आपको पता लगाना है तो कोलाइटिस वाला जो कंपोनेंट है उसके लिए तो सीटी करना पड़ेगा। इट इज सीटी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेक फॉर द इन्फ्लेमेशन ऑफ अ पेशेंट। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑप्शन नंबर बी, इट इज ऑप्शन नंबर डी, डाइवर्टिकुलोसिस। दैट तो पैथोलॉजी। इसके अंदर यहाँ पे फीकल मैटर फंस जाता है, और फीकल मैटर अगर यहाँ पे फंस जाएगा इसके अंदर में तो फिर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो फीकोलिथ्स कैन कंट्रीब्यूट टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दिस एंड कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल। तो अगर ये वॉल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अगर ये वॉल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब हमें सीटी स्कैन करना होता है। बट अभी जो दिखाई दे रहा है वो डाइवर्टिकुलोसिस है। सो आंसर टू 67 इज गोना बी आंसर्ड बाय यू एज ऑप्शन नंबर डेल्टा। कमिंग टू 68, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। ये चर्नोबिल में हुआ, फुकुशिमा में हुआ। न्यूक्लियर रिएक्टर पे कभी भी डैमेज हो जाए तो लाइक दे कैन बी डैमेज टू द जीआई। तो डायरिया हो जाता है, अनीमिया हो जाता है। दो बच गए, सीएनएस और सीवीएस। तो आप आंसर कर दो प्रेजेंस एज ऑल एक्सेप्ट। यस गाइस, वेरी इजी। जीआई और हेमोपोएटिक तो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। सो बिकॉज फास्ट डिवाइडिंग सेल्स आर मोस्ट वल्नरेबल टू रेडिएशन, तो ये तो इन्वॉल्व हो ही जाएंगे। कौन सी चीज़ के इन्वॉल्वमेंट लीस्ट लाइकली मिलेगी? तो यस, क्योंकि ब्रेन ऊपर कवर है ना स्कल का, तो स्कल के कवर की वजह से यूजुअली ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट कम होगी, क्योंकि ब्रेन तो देखो वैसे भी लाइक आई कैन से सेल्स डोंट डिवाइड। आंसर टू 68 इज ऑप्शन नंबर सी, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम प्रेजेंट्स विद ऑल इन्वॉल्वमेंट एक्सेप्ट सीएनएस। सीवीएस वाले में भी हार्ट फेलियर के फाइंडिंग्स पेशेंट में आ सकते हैं, but then CNS involvement is least likely to be seen in acute radiation syndrome. Answer to 68 is C. We come to 67. Which of the following is poorly radiosensitive? एक तो होता है हाईली रेडियो सेंसिटिव, यहाँ पे उल्टा पूछ लिया, poorly रेडियो सेंसिटिव। यस कैस 69 प्लीज। यूजुअली द क्वेश्चन इज हाईली रेडियो सेंसिटिव, इधर उल्टा है। सेमिनोमा तो हाईली रेडियो सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए तो मैं हाई लिख ही रहा हूँ यहाँ पे। इविंग sarcoma भी हाईली रेडियो सेंसिटिव होता है। So I think now it is easy for you to identify which of them is poorly radiosensitive. The answer would be yes, guys. Waiting for 69. Yes, sarcoma. आंसर टू 69 इज ऑप्शन नंबर डी। वो तो पोरली रेडियो सार्कोमा के लिए तो सर्जरी ही करेंगे ना, उसमें रेडियो सेंसिटिविटी तो नहीं करेगा। इवन जो स्मॉल सेल कैंसर होता है सरप्राइजिंगली वो हाईली रेडियो सेंसिटिव होता है। इवन स्मॉल सेल कैंसर इज हैविंग रेडियो सेंसिटिविटी बट सार्कोमा डज नॉट हैव रेडियो सेंसिटिविटी। सो आंसर टू 69 इज डेल्टा। 71, यू कैन सी अ इमेज जिसमें कॉन्ट्रास्ट ब्रेन में भी क्या हुआ है, तो येलो दिखाई दे रहा है। और कॉन्ट्रास्ट जो है वो रेडियो एक्टिव ग्लूकोज जो है किडनी में जा रहा है, नीचे ब्लैडर में दिखाई दे रहा है। लाइक हेयर यू कैन सी ना, ब्लैडर में कॉन्ट्रास्ट जा रहा है। प्लस मेटास्टेसिस जो है सीटी स्कैन का, मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है सीटी स्कैन का और पेट स्कैन का। सो द इमेज दैट इज शोन इन दिस पर्टिकुलर केस इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द पेट सीटी। PET CT image will be this pinkish blackish in color. This pink and black is a combination of CT scan because anatomical details can also be seen. Like हम kidney, liver, lungs को identify तो कर पा रहे हैं ना. We can see the bladder, we can see the bone. So this is a PET CT that is visualized here. The answer to 70 is option number C. What is first investigation to be done for a case of transient ischemic attack? TIA means that there is a clot from the heart and it went in the brain of the patient. तो सबसे पहले हम उस पेशेंट में क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा यस गाइस, कमेंट ऑन 71 प्लीज। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इन अ गाय विद ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। पेट सिटी वर्सेस पेट ना, तो पेट वाला जो होगा ना उसमें इमेज नहीं आएगी ना। पेट वाला जो इमेज होता है उसमें अनाटमिकल डिटेल्स आर नॉट प्रेजेंट। इफ इट्स अ प्लेन पेट स्कैन, then plain PET scan, then organs will not be visualized. Only you will be able to see the brain and the urinary bladder and the skeleton. But ऐसे lungs की boundary नहीं दिखाई देगी ना, lungs cannot be seen, liver and kidney cannot be seen, so organs cannot be seen in a PET CT. But in a PET scan organs cannot be seen, but organs can be seen in a PET CT scan. अगर ऐसी इमेज आपको आई है organs की anatomy is not visible, then you will say PET scan. And if it is a combination of anatomy plus functional imaging, then you will say it's a PET CT. PET is functional.
ओनली ब्रेन दिखाई देगा, यूरिनरी ब्लैडर की वहाँ कॉन्ट्रास्ट रेडियो एक्टिव होता है और जहाँ जहाँ पे मेट्स होते हैं, राइट, सो दैट्स इन द skeleton of the patient, but no anatomical details of lungs, liver, kidney and all those organs will not be visualized in a PET scan. So I hope that answered to your query. 71, the first answer, he said, what is the first investigation to be done? So your answer would be given as carotid Doppler, because contrast जो है वो तो ब्रेन में जाएगा, सॉरी जो क्लॉट्स होते हैं वो कैरोटिड आर्टरी से ब्रेन में जा रहे होंगे, तो ट्रांजिट इश्केमिक अटैक हो गया। यहाँ पे सीटी स्कैन नहीं करते हैं, सीटी स्कैन तो अगर क्वेश्चन होता स्ट्रोक के लिए तो मैं स्ट्रोक के लिए करता। डिफ्यूजन वेटेड एमआरआई करते हैं एक्यूट इश्केमिक स्ट्रोक के लिए। ससेप्टिबिलिटी वेटेड एमआरआई करते हैं ट्रोमैटिक एक्सोनल इंजरी के लिए। If a patient is having a TAI, traumatic axonal injury, then we go in for a susceptibility weighted MRI, क्योंकि हम हेमोसिट्रिन के डिपॉजिट्स इन द ब्रेन को देखना चाहते हैं। लेकिन इन ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक देयर इज अ cerebral embolism. That means that there is some clot which is not starting from the brain. It is coming from the heart or it is coming from the carotid artery. So the test that you'll be doing in the patient is a carotid Doppler. Answer to 71 is option number A. Coming to 72nd, what is best investigation for diagnosis of a brain tumor in a patient? Yes, guys, we're almost nearing the end of our discussion. Best investigation for diagnosis of a brain tumor. Plain MRI भी है, gadolinium enhanced MRI भी है. So basically अगर आपको cerebral edema देखना है, because brain tumor will always cause cerebral edema, तो हमें गैडोलिनियम एनहांस्ड एमआरआई करना है। नॉर्मली तो हम ब्रेन में हमेशा एमआरआई करते हैं, बट वेन एवर इट्स गोना बी लाइक अ सेरेब्रल एडिमा कंपोनेंट प्रेजेंट, वी गो इन फॉर अ गैडोलिनियम एनहांस्ड एमआरआई। आंसर इज नॉट एमआरआई गाइस, आंसर इज नॉट एमआरआई, इट इज अ गैडोलिनियम एनहांस्ड एमआरआई। फॉर एनी टाइम एनी लीजन इज कॉजिंग अ ब्रेन एडिमा, प्लेन एमआरआई पे नहीं आता है, सो वी हैव टू गो इन फॉर अ गैडोलिनियम एनहांस्ड एमआरआई। आंसर टू 72 इज ऑप्शन नंबर बी। इसको नोट्स में ऐड कर लेना, बिकॉज मोस्ट गाइस गिव द आंसर रॉन्ग। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सीटी स्कैन दैट इज शोन हेयर? तो सीटी स्कैन में यहाँ पे आप देख रहे हो सेरेब्रल एडिमा, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रहे हैं। सीटी स्कैन में अंदर की तरफ होता है वाइट मैटर, बाहर की तरफ होता है ग्रे मैटर। सो द इन्वॉल्वमेंट इज ओनली ऑफ द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन विच इज कॉजिंग दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। दिस इज द मैनिफेस्टेशन दैट इज सीन विद रिस्पेक्ट टू वेजोजेनिक सेरेब्रल एडिमा। द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 73 इज ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि साइटोटॉक्सिक और वेजोजेनिक को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो आइडली तो क्योंकि आप पढ़ चुके हो तो आपको आना चाहिए साइटोटॉक्सिक और वेजोजेनिक को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो रैदर तो ये मुझे आपसे पूछना चाहिए, पर क्वेश्चन उल्टा हो जाता है, स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइटोटॉक्सिक सेरेब्रल एडीमा में देर इज लॉस ऑफ ग्रे मैटर वाइट मैटर डिफरेंशिएशन, की ग्रे मैटर वाइट मैटर अलग अलग नहीं दिखाई देते। लॉस ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर डिफरेंशिएशन इज व्हाट इज कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक सेरेब्रल एडीमा। जबकि जो वेजोजेनिक सेरेब्रल एडीमा होता है उसमें जो डिफरेंशिएशन होता है वो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा और आप ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख पाएंगे। तो यहाँ पे तो यू कैन सी दैट वेजोजेनिक सेरेब्रल एडीमा सिर्फ वाइट मैटर की इन्वॉल्वमेंट होती है। इट इज़ वाइट मैटर एडीमा दैट कैन बी सीन, सो इट विल लुक लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनटू द ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन। दिस इज डिफरेंशिएशन बिटवीन साइटोटॉक्सिक एंड वेजोजेनिc cerebral edema. There are two images which are given here, two different views that have been given. Both of the views show the same thing, that is vasogenic cerebral edema. स्ट्रोक में कौन से वाला एडिमा होता है? तो स्ट्रोक में होता है साइटोटॉक्सिक। तो वहाँ पे हमेशा पढ़ते हैं लॉस ऑफ ग्रे मैटर वाइट मैटर डिफरेंशिएशन। अगर किसी को टीबी मेनिंजाइटिस हो जाए, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस हो जाए, ब्रेन एब्सेस हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, इन सारी कंडीशंस में होता है वेजोजेनिक सेरेब्रल एडिमा। If a person is having tumor of the brain, brain abscess, neurocystic TB meningitis, then it causes a vasogenic cerebral edema. Loss of gray matter, white matter differentiation is that stroke manifestation. So the correct answer to 73 is option number B. Coming to 74, what is the imaging modality choice for chemodectoma? Chemodectoma is like the alternative terminology for a extraadrenal pheochromocytoma only. कि pheochromocytoma जो है वो extra adrenal location पे। नॉर्मली तो जो हम पढ़ते हैं दैट इज फेओक्रोमोसाइटोमा। फेओक्रोमोसाइटोमा अगर एड्रिनल मेडुला के बाहर हो तो उसको पैरागैंग्लियोमा भी बोलते हैं या उसको कीमोडेक्टोमा बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि इसके लिए क्या टेस्ट करेंगे। तो इसको तो मैंने इवन अपने रूटीन मेडिसिन क्लासेस में भी बताया हुआ, रेडियोलॉजिस्ट तो इसको बताते ही हैं और ये फेवरेट है आपके एग्जामिनर का। दैट इज गैलियम 68 डोटाटेट पेट सीटी स्कैन। जितने भी पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं,
चाहे वो पूछे इंसुलिनोमा, ग्लूकेगोनोमा, सोमैटोस्टैटिनोमा, फेओक्रोमोसाइटोमा, पैरागैंग्लियोमा, कीमोडेक्टोमा, ये जितने भी पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं सभी के लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन चॉइस रहता है दैट इज गैलियम 68 डोटाटेट पेट सीटी स्कैन. सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 74 इज ऑप्शन नंबर सी. ये अगेन आई रेट एज अ मस्ट नो क्वेश्चन फॉर टुडे. सेरेब्रल एडीमा वाला जो कंपोनेंट है वो तो चलो ठीक है, अगर आता है याद रह गया तो अच्छी बात है, बट ये वाला 74 गलत नहीं होना है कभी भी. डोटाटेट पेट सीटी स्कैन, दैट इज 74th is sorted. We come to the last one for today, टेक्नीशियम स्कैन. तो मैं बाकी भी ऑप्शंस लिख लेता हूँ. चलिए आप लोग कमेंट करिएगा. आई थिंक दिस इज द लास्ट वन फॉर टुडे, सो लेट्स डू इट क्विकली. Technetium 99 labeled RBC is used for assessment of which of the following conditions? Yes, guys, I think this is an easy one. जो मिकल्स रिवर्टिकुलम होता है उसके लिए करते हैं टेक्नीशियम 99 पर टेक्नेट स्कैन. आपका आंसर गलत है, सी आंसर नहीं है. जो टेक्नीशियम 99 पर टेक्नेट स्कैन होता है वो मिकल्स रिवर्टिकुलम के लिए होता है. जो पैराथ्रोइड एडिनोमा होता है उसके लिए जो यूज़ होता है वो टेक्नीशियम 99 स्पेक्ट सीटी होता है. भाई आजकल लोग रील देखने में ज़्यादा बिजी हैं एज़ कम्पेयर टू सीरियस स्टडी करने में. तो आपको ये डेटा याद रखना है यार. ये छोटी छोटी चीज़ें ना जो रील्स में से रील से नहीं होती, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है ये सारा. पैराथ्रोइड एडिनोमा और पैराथ्रोइड कैंसर जो है वो तो एक ही डिफरेंशिएशन हो जाएगी ना. इसके लिए दोनों के लिए स्पेक्ट सीटी करेंगे टेक्नीशियम 99. आंसर है टेक्नीशियम 99 लेबल्ड आरबीसी. दीज आर यूज टू कैलकुलेट व्हाट इज कॉल्ड एज इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ द हार्ट. तो टेक्नीशियम 99 पे 3 क्वेश्चंस होते हैं. एक होता है, टोटल 4 होते हैं इनफैक्ट, तो मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे. एक तो होता है टेक्नीशियम 99 टीसी मतलब टेक्नीशियम 99, और उसके बाद में लाइक द वर्ड दैट कैन बी रिटन इज सिस्टम ए बी. तो टेक्नीशियम 99 सिस्टम ए बी स्कैन, इसको एक तो कार्डियो में यूज़ कर रहे होते हैं. टेक्नीशियम 99 सिस्टम ए बी स्कैन कैन बी यूज टू कैलकुलेट इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ द हार्ट, दैट इज़ वन जो अभी अभी बताया गया. दूसरा है टेक्नीशियम 99 सिस्टम ए बी लेकिन साथ में लिखा होगा स्पेक्ट सिटी. then this would be answered for tumor that is parathyroid adenoma or a parathyroid cancer which could be causing excess production of PTH hormone. And the last one is technetium 99. अब सिस्टम में भी वर्ड नहीं होता. पर टेक्नेट स्कैन, द टेक्नीशियम 99 पर टेक्नेट is used for evaluation of Michel's diverticulum. The answer to this particular question is Michel's diverticulum वही कंडीशन है जो रूल ऑफ 2 को फॉलो करती है. इसको हम सर्जरी में स्टडी कर लेंगे. But the answer to question number 75 is option number A. So we are sorted for today, guys. Thank you so much for joining for today. And keep working. I mean, जो भी गलत हुए उनको थोड़ा evaluate कर लेना. And I'll see you again next week. So with another subject. And ये जो time दिया गया इसको अच्छे से utilize कर लीजिए because this is the time to make your career. And try to cut down on whatever time that you spend on internet and all other things because extra curricular activities तो होती रहेंगी ज़िंदगी भर. लेकिन अभी जो टाइम है दैट इज़ फॉर सीरियस स्टडी. तो टेक केयर, बाय बाय. नो, इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए इकोकार्डियोग्राफी भी नहीं यूज़ करते. वी टेंड टू यूज़ टेक्नीशियम 99 आरबीसी फॉर इजेक्शन फ्रैक्शन. रेडियो आजकल जो स्कैन यूज़ होता है ना दैट इज़ रेडियो न्यूक्लियर स्कैन्स आर यूज्ड फॉर इवेलुएटिंग द हार्ट. चलो, वी आर डन फॉर टुडे गाइस. थैंक यू, टेक केयर.